So there is something about tikkis, okay? Being a Sindhi, every week something or the other की टिक्की बनती थी, okay? तो अभी हम बना रहे हैं आलू की टिक्की, very simple, brought together with fresh breadcrumbs, okay? And some recipes use a little bit of milk, but I'm actually using paneer here. जो highlight है ये recipe की mantra spices, imami mantra spices का सब्जी मसाला. Now when you say sabji masala, it could be red chili powder, turmeric, dhania, jeera, saunf, khade masale and a combo. So this is like mind blowing because I don't have to put anything. प्याज भी नहीं, चलो मैंने मिर्ची डाली है, ढेर सारा धनिया डाला है, ओके वो मानते हैं. Now I'm adding 2 चम्मच हमारा मंत्रा स्पाइसेस का सब्जी मसाला. वाओ, लुक एट द कलर. इट टेस्ट एज इफ इट्स बीन फ्रेशली ग्राउंड. नो इमेजिन ये पाउच है, ब्यूटिफुल, इट स्टेज फ्रेश. अभी ये मैं फ्रिज में रख दूंगा और इन अ नाइस कूल डार्क कबर्ड 6 महीने 7 months 6 months, बट आई एम गोइंग टू यूज इट सो मच. 2 हफ्तों में इट्स गोइंग टू बी ओवर. आई लव दिस सो मच, इट्स सो गुड. नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट ग्रेटिंग आवर आलू को हम कद्दूकस करेंगे थोड़ा सा. लवली, तो हमने ग्रेट कर दिए आलू. ओके, इफ यू वांट टू डू दिस रेसिपी विद स्वीट पोटैटो, अमेजिंग. यू वांट टू डू दिस विद सूरन, अमेजिंग. यू वांट टू डू दिस रेसिपी अरबी के साथ, अमेजिंग. अगर आपको इसमें पालक मेथी चॉप करके डालना है, अमेजिंग. यू नो, paneer. So I've got literally, I've taken 2 medium-sized boiled potatoes and I've taken about 100 to 150 grams. 100 या 150 ग्राम मैंने पनीर लिया है. ओके, तो मैंने अच्छी तरह ये ग्रेट कर लिया है. ब्यूटीफुल. तो 1-2 स्लाइसेस फ्रेंच ब्रेड किए एंड देन आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दिस टुगेदर. बिल्कुल जैसे आप रोटी का आटा जैसे मसलते हो ना, एग्जैक्टली लाइक दैट. जस्ट काइंड ऑफ मिक्सिंग इट ऑल टुगेदर. Lovely. Look at this now. Suddenly, from nothing, I've got this mind-blowing, amazing mixture. And I mean, I can get so many spices. I mean, I think this is a great point of conversation in a party among chefs, among cooks. Pass it around and let's see who can guess what the spices are, and I will give you a prize. Okay, I'm telling you there are many spices in this. Now what I like to do, I want to add just a little bit of besan to this. Okay, now besan adds protein, it adds flavor, it's going to bind it also together really nicely, and you know what, it gives a really nice crunch also to it. Okay, so here I'm going to be shallow frying this literally with हेल्थी एंड टेस्टी का अल्ट्रालाइट सोयाबीन ऑयल. ओके, पहले जरा हाथ धो लूँ मैं एंड आई विल बी बैक. तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल. एज आई सेड, वी आर शैलो फ्राइंग इट. वी कैन इवन लाइटली पुट वेरी लेस ऑयल एज वेल, बट यूजिंग दिस ऑयल इज रियली गुड. नॉन अब्जॉर्बेंट है, लाइट है, न्यूट्रल है, हेल्थी भी है, विद अ लिटिल बिट ऑफ वाटर और ऑयल. एंड देन गोले बनाएंगे इसके. एंड यू कैन मेक रियली स्मॉल टिक्कीज इफ यू वांट टू मेक सम बर्गर्स और स्लाइडर्स विद दिस, वो भी बन सकते हैं. एंड नाइसली गोल्डन फ्राई करेंगे हम इसे सुनहरे कलर में. उसके साथ आई हैव अ आइडिया. I have nice idea for sauce. I can make 10 sauces. I can take mayonnaise, make an achari mayonnaise. I can do a hot chili sauce. Bottle से खोलो, ketchup के साथ mix कर दो, soya sauce के डाल दो. You can make many sauces. Like that, you should try to use exactly what you have in your fridge.
and it makes a decent sauce, I'm sure. So I have some lovely dahi, okay, and I have some green chutney, okay. बन गया मेरा sauce, easy. So पनीर का टेस्ट, सब्जी मसाला का टेस्ट, आलू का टेस्ट, थोड़ा सा बेसन, you've got green chilies, you've got coriander, and look how amazing and such an easy dish can be created so beautifully आपके kitchen में. Let's start plating. So, potato and paneer tikkis with sabji spice served 3 ways.